So तुम्हें एक बंदी पसंद आती है, but the thing is you're not getting that kind of a respect from her and you want to make sure कि she fears losing you. अभी क्या सीन हो चुका है? What you basically try to do is you try to ignore her text. तुम थोड़ा सा ड्रामा वामा कर देते हो. You try to play manipulative tricks, but it's not working and you know that's childish. So the main goal is not to be manipulative but actually become the kind of man she fears losing. ठीक है? So in this video I'll talk about 7 points which will completely help you to make sure that she will regret पूरी जिंदगी भर that she was not yours. So yeah, without any further ado, let's get started. For those of you who might be wondering ki, bro, who are you? Well, my name is Preetham and I help single guys to become this man with multiple options. So this was me. I was able to transform myself from this shy, insecure guy into this, a guy who has options. And again, my results cool, whatever. But the best part, I've seen my students go through the exact same transformation. Guys who couldn't even start a conversation now confidently approach, connect, and completely change their lives. So I've helped half a dozen of guys to lose their virginity and become this man with multiple options. I've served 50 plus guys in my inner circle and helped them to transform into someone who's capable of approaching random girls and get their phone numbers and go on multiple dates. If you don't follow me on Instagram, do check that thing out. Post a lot of my student testimonies and that kind of thing. ये हमारे inner circle students के results वगैरह है. तो चलो भाई, let's talk about point number 1 and that is stop making her the center of your life. ठीक है? So most of the guys क्या करते हैं, एक बंदी रहती है उसी के पीछे कॉल करते रहते हैं 8 बजे बेबी उठ गई कि नहीं उठ गई, फिर 12 बजे बेबी खाना खा लिया कि नहीं खाया, कहाँ पे हो, कॉलेज से आ गई कि नहीं आ गई, शाम को क्या कर रही हो, किसके साथ घूमने गई हो. सो इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड शी नोज योर एंटायर लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड हर, तो पूरी पावर किसके पास है? उस बंदी के पास है. एंड women आर वेरी गुड एट सेंसिंग दिस थिंग. ठीक है? पैटर्न रिकॉग्निशन वाली जो चीज है ना, बंदियों को पता रहता है. सो दैट्स व्हाट बॉयज डू, राइट? कॉन्स्टेंटली कीप चेकिंग ऑन हर. बट व्हाट हाई वैल्यू मैन डज इज उनके पास भाई मिशन रहता है. यू हैव एज अ मैन यू हैव पर्पस. यू हैव योर बिजनेसेस, फिटनेस, फ्रेंड्स, फैमिली, पर्पस. पर अनलेस एंड अनटिल ये जो शब्द है पर्पस ये नहीं रहेगा, यू विल कॉन्स्टेंटली कीप चेसिंग दैट गर्ल. ठीक है? सो शी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर एंटायर लाइफ. Not your entire life. Let me repeat that. ठीक है? So people fear losing someone who has options and purpose. अब कोई भी चीज देख लो, लाइक ये मार्केट में वैल्यू कैसे क्रिएट होती है. सो इफ समथिंग इज रेयर एंड वो चीज जाने वाली है, दैट्स वेयर दैट फियर स्टार्ट्स टू कम अप, राइट? एंड पॉइंट नंबर 2 इज नेवर चेस वैलिडेशन. सो ये मैंने बहुत देखा ड्यूरिंग माय कोचिंग कॉल्स. whenever a guy gets into this relationship, he is chasing validation. Okay? कि so neediest man always loses. जितना तुम needy रहोगे, see on paper you know you shouldn't be needy, you need to be non-needy, but ये non-neediness होती क्या है? Where does it come from? ठीक है? If you're constantly asking कि यार do you love me, why didn't you reply, भी मैंने तब कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं किया, are you always talking to someone else, किससे बात कर रही थी, बिजी आ रहा था तुम्हारा फोन, क्या? you're telling so basically you're telling her your emotional state depends on her. तो ये क्या imply कर रहा है ये सारी चीजें? So women, they don't operate on logic. वो subconscious level पे they are everything like they're consuming. Even if a girl is 19, उसको पता नहीं ये चीजें हो क्या रही है, but her subconscious is very evolved. उसको पता है, okay, I have this guy by his balls. Okay, so confidence is attractive because it says I'd love you in my life, बट आई डोंट नीड यू इन माई लाइफ. ये नीड वाला जो चीज है, ठीक है? हाँ तुम हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इज इट लाइक हाँ 4 दिन बुरा लगेगा अगर तुम नहीं हो, बट आई एम ओके विद दैट. ठीक है? सो अगर इफ यू कैन पोजिशन योर सेल्फ इन दैट वे, यू डोंट नीड हर वैलिडेशन, वेयर यू डोंट नीड हर इन योर लाइफ, दैट्स वेयर दैट फियर वाला एलिमेंट आ जाता है. ओके? वेयर शी फियर्स लूजिंग यू. सो बिल्ड अ लाइफ वेयर शी वांट्स टू ज्वाइन. तो मैंने एक चीज देखी है, बंदा क्या बोलता है, हाँ भी तुम जर्मनी जा रही हो अपनी स्टडीज के लिए, ठीक है तुम जाओ, मैं कॉन्स्टेंटली आई विल बी इन टच विथ यू, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना पीना देखना, एवरी टाइम विल बी ऑन अ वीडियो कॉल. तो ब्रो लाइक व्हाट द फक, शी इज लिविंग हर लाइफ, वो अपनी जिंदगी जी रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसकी जिंदगी का पार्ट बन रहे हो. एंड नाउ यू फियर वे मोर ऑफ लूजिंग हर, बिकॉज क्या सीन है, बिकॉज क्यों, हर वैल्यू इज वे बिगर देन योर्स. ओके? अगर वो बंदी चली गई, इन्वेस्टमेंट वाइज तुमने कितना यहाँ पे दिया, so constantly you're insecure. No wonder you're insecure because investment भाई इतना किया है, तो obviously we need something. So rather than this thing, build a life she wants to join. यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम उसकी जिंदगी में जाना चाह रहे हो. Okay? So attraction isn't built by convincing her. Logic बातें ना, it's by
it's built by becoming a man she naturally respects. She wants to be a part of your life because तुम्हारी जिंदगी में इतना चल रहा है, your business is going on, you're working on your career, you have family to take care of, तुम्हारे पास time ही नहीं है. So that's where she wants to be a part of it. And this is a natural paradox. ठीक है, कोई बंदा अगर time दे रहा है, she doesn't want that thing. जो बंदा time नहीं दे रहा, she wants his attention. So in any market, so either you can make things cheap या फिर increase its value. ठीक है, so same way तुम्हारा जो अटेंशन है उसको हमको सुपर पावर करना है बाय नॉट शोइंग, बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, राइट? सो लिफ्ट वेट्स, मेक मनी, लर्न कम्युनिकेशन, बिल्ड स्टेटस, डेवलप करिश्मा. योर लाइफ इज एक्साइटिंग, शी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 इज like be willing to walk away. This thing is like your ultimate superpower. If a man in any given situation is willing to walk away पहले, then he has all the power. ठीक है, दिस इज वेयर मोस्ट मेन फेल, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो मैंने बोल दिया, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ऑब्वियसली यू विल फियर लूजिंग हर, बट उसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है देन शी विल फियर लूजिंग. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शी नोज दैट शी कैन बी रिप्लेस्ड, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी इतनी हैपनिंग है, एनी गर्ल वुड बी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड एक मैं कॉल पे था तो बंदा क्या बोला कि ब्रो मेरा 4 साल का रिलेशनशिप था, उस बंदे ने मेरे को एक चीज बोली दैट यू आर टू इनोसेंट. ओके, और लाइक एंड ही सेड कि ब्रेकअप से ज्यादा मेरे को ये जो उसने कमेंट मारा यू आर टू इनोसेंट, ये मेरे को बहुत लगा, बिकॉज दैट गर्ल न्यू कि आई डोंट हैव दैट थिंग इन मी, या फिर आई कैन अट्रैक्ट समवन, या फिर वो मेरे में है नहीं. सो इट्स बेटर टू बिकम दैट काइंड ऑफ अ गाय where you have options and you can replace her. So if you can walk away early, she will, वो जो value preposition जो बने हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. Okay, so they tolerate disrespect because they are afraid she'll leave. अगर बंदी बोलती है मैं जा रही हूँ, you're like fuck off, next day next. अगर imagine that kind of a guy, so obviously a girl will behave, right? And behavior ये बात करने से नहीं होता, you need to show that thing to her. Hey, like I'm okay, don't disrespect me, but you're a separate entity, I'm a separate entity, but don't disrespect me in that way, right? High value man don't threaten. ये threat नहीं दे रहे हम लोग यहाँ पे, धमकियां नहीं दे रहे हम यहाँ पे, we are just actually like what, अच्छे से उसको समझा रहे हैं. So they have high standards. अगर तुम ये करोगे I'm not going to tolerate that thing, right? So if someone repeatedly disrespects them, they just leave. Okay, so not out of ego के नहीं, but because of self respect. You value yourself so much because you know your value. समझ रहे हो तुम्हारी वैल्यू क्या है? You are contributing so much, your family is dependent on you. Like there are 4 people whose life is dependent on you because you're feeding them, you're making something happen in this life because people are like भाई ये बंदा valuable है, his thing, he is important to us. So imagine that kind of a guy, a girl, she just can't walk away. And ठीक है चली भी गई, उस तरह का बंदा उसको कहां पे मिलने वाला है? It's so hard for her to find that kind of a man, right? Who's purpose driven, who has stuff to do in his life. Hey, sorry to interrupt your video. Watching content is awesome, but if you want to actually become a man with multiple options, you need to take real action. And if you want me to help you to take real action, there should be a link down in the description. Click on that link, fill out the survey to see if you actually qualify to work with me directly. Now, back at the video. So point number 5 is, so stay slightly unpredictable. So I told you one thing, like after analyzing a lot of women and my client key, this thing, one thing is for sure is women are massive pattern recognition machine. ठीक है, recognition machine. They can sense your pattern. 4 दिन वो देखेंगे अच्छे से, अच्छा ये सुबह उठता है, ये खाना पीना करता है, इसके ये 4 दोस्त हैं, this is who he talks with, okay? And ये इस टाइम पे ये करता है, उसको सब पता चल जाता है डेटा. तुम आगे पीछे इधर उधर भी कुछ करोगे, फट से वो ये कर लेंगे. सो मेन थिंग यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस बोरिंग थिंग स्टार्ट्स टू कम, बिकॉज कोई भी चीज इनिशियली एक्साइटिंग होती है, बट तुम्हें पिज्जा पसंद आता है, बट रोज तुम 3 times a day if you're eating pizza for like 365 days, that thing won't even have that kind of effect on you, right? So don't be boring, keep growing. जो तुम version who attracted her is this guy, but this is the secret, ठीक है? But if you want to keep attracting her, you need to grow into a better version of you. That's where she will respect you and she'll fall for you all over again. Because अगर तुम सेम बंदे हो, ये अट्रैक्शन नहीं रहता भाई. अट्रैक्शन इज जस्ट अ फीलिंग, फीलिंग गोज अवे. अब तुम्हें लेट्स से तुम यू गॉट हर्ट एंड तुम्हें दर्द हो रहा है, बट वो दर्द एक फीलिंग है, वो चली जाएगी. इफ यू आर अफ्रेड एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो एक फीलिंग है, वो चली जाएगी, राइट? So if you're happy, that feeling goes away. If you're sad, that feeling goes away. So if we are relying, love is a feeling.
So rather than this, we need to constantly keep her attracted to us is by growing. Right? Keep learning new things, travel, take risks, have stories to tell. A guy who's like, man, we were not supposed to be domesticated. Right? We were like explorers. We men were like explorers, going and doing shit. To do that thing so that you have stories to tell, meet new people. So mystery isn't about hiding things, it's about constantly evolving. सो नेवर ट्राई टू मेक हर जेलस. ये मैंने बहुत देखा है, बंदे क्या करते हैं, हाँ मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं 4 बंदियों से बात कर रहा हूँ. नेवर ट्राई टू डू दैट थिंग. सो दैट शोज योर इनसिक्योर. सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेबॉय सीक्रेट्स इज ऑन द इंटरनेट इज लाइक फ्लर्ट विद अदर गर्ल्स, पोस्ट फेक स्टोरीज. ये तुमने भी किया, मैंने भी किया. इंस्टा पे स्टोरी डाल दी, आई एम हैविंग दिस फन एंड एक्चुअली यू आर इन योर बेड अंडर योर ब्लैंकेट एंड यू आर जस्ट लाइक पोस्टिंग की लोगों को लग रहा है कि यार मेरी कितनी अच्छी जिंदगी है. राइट? सो इफ यू आर डूइंग दिस शिट, that's kiddish, that's boyish, right? That's insecurity disguised as confidence. So real confidence doesn't need performance. Okay, so let's take an example. Bill Gates या फिर अंबानी या फिर Elon Musk, he doesn't have to show कि मेरे पास इतना पैसा है. It's like they're just rich. Same way, they don't need to perform. So if she values you, she'll notice other women naturally. ठीक है? You don't have to manufacture it. अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल वैसे सेटअप है and you are that kind of a dude who is valuable, people will gravitate towards you. लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में होंगी. And if she knows that ये replacement वाला जो मैं बोल रहा हूँ, if she'll understand कि यार I can get replaced anytime, she'll behave and she wants to be a part of it. ठीक है? So, and और एक चीज, be emotionally calm. Bro, like the first relationship which we usually get into, it's more or less like हम क्या करते हैं, हम बहुत reactive रहता है. We try to control the girl. And we are like, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मैंने तुम्हें कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं, blah blah blah, right? And we try to play this manipulative games, we try to make her feel guilty, all this shit. This thing, I have done it, you have done it, okay? So more or less, don't do this thing. Women don't trust emotional chaos, क्योंकि वो खुद ही chaos होती है, वो बवंडर होती है एक. She wants someone like a solid rock, okay? Who can, जो कितना भी बवंडर आए, जो रॉक शुड बी रॉक सॉलिड. वो दैट्स वेयर उसका जो इनर फेमिनिटी है, शी ट्रस्ट्स योर मैस्कुलिन साइड. ओके, दैट्स वेयर शी नोज दिस गाय डजंट गेट क्रश्ड अंडर लाइक immense pressure. I can trust this guy with my feelings and the other side of things. So calmness is power. Speak slowly. If someone disrespects you, don't go and like shout at them. Be like, okay, but she won't hear from you ever again. समझ रहे हो? You have such high standards. So control your emotions. Don't react impulsively. A man who controls himself is difficult to replace. ठीक है? So closing thoughts. The biggest playboy secrets जो हम बात कर रहे थे isn't making her afraid of losing you. It's becoming the kind of man who doesn't fear losing anyone. तो ये paradox ही है, irony है. If you try to chase कि यार fear me, या फिर you're trying to thump your chest and be like मेरे जैसा कोई नहीं है. No. Rather than that, show her. You know what? Become the kind of man who doesn't fear losing anyone. चली गई, ठीक है, that's okay. I have other people in my life. My life is happening. I won't even notice you. 2 दिन बुरा लगेगा, but okay. Right? That's exactly when people value your presence the most. So build yourself until your absence is felt. That's the real attraction, right? That's why I don't like this pick up and like this game and all this shit. It's because it's like you're putting on a performance, but in reality you're not that good. So make sure you become that kind of a man. Okay? So if you want my help to become this man with multiple options, there should be a link down in the description. Click on that link, fill out the survey to see if you qualify to work with me directly. Okay? So just tell me, how did you find this video? Like, should we keep doing this kind of things, doodling on the screen, and you can follow rather than me just sitting and talking endlessly. So I think this is way better and we'll keep doing this thing. Okay? So comment down below what were the points which hit you deeply and what were the things which you were doing initially. And now how are you going to change those things? Okay, hope you found this video helpful. Again, my name is Preetham and I will see you in the next one.